Hello and welcome to Legacy IS Academy. So in today's video, we are going to discuss about Parker Solar Probe. ठीक है? So Parker Solar Probe ये अभी क्यों न्यूज़ में चल रहा है? Because this has you can consider this is the first man-made object that has gone very close to the surface of sun. ठीक है? This is a project of NASA. Parker Solar Probe is a project of NASA, and it has created a record by going very close to sun at the rate of 6,92,000 kilometers at this speed. It has crossed till it has reached till the temperature of 1377 degrees, which is the solar surface. से भी distance, there is some amount of distance left to reach till the solar corona. At that distance also the temperature is 1377 degrees. ठीक है? Currently it is 6.1 kilometers million kilometers close to sun. So देखने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है. If you see 6.1 million kilometers, this is a very large number. But if we try to get an estimate of how far is this satellite or how far is this probe mission from the sun's surface, we can understand कि let's say this is sun, this is earth, और इनके बीच में अगर ये gap 1 मीटर का है, तो ये जो solar probe है ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर दूर है. This is only 4 centimeter. If we get an estimate that this distance is 1 meters, the sun is 1 meter away from earth, so this Parker Solar Probe is only 4 centimeter away from sun's surface. ठीक है? Now this 4 centimeter actually denotes कि ये बहुत ही close distance है. sun के surface से this is a very close distance, and that is why it has created this record. Now talking about the satellite, ये कैसे this is consisting of advanced carbon composite heat shield. Advanced carbon composite heat shield कैसे काम करता है? क्योंकि we know that 1377 degrees is quite a high temperature. तो बीच में इन दो ये कैसे काम करता है? कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड कैसे काम करता है कि इट हैज कार्बन कंपोजिट फोम बिटवीन टू कार्बन प्लेट्स. सो ये एक कार्बन प्लेट है, ये दूसरा कार्बन प्लेट है, और इनके बीच में ये है कार्बन कंपोजिट फोम. ठीक है? सो दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन टू कार्बन प्लेट्स. अब ये जो कार्बन कंपोजिट फोम है, यू इमेजिन इट्स कैपेबिलिटी कि इसके एक तरफ 1377 डिग्रीज टेम्परेचर है और दूसरे तरफ 29 डिग्रीज का टेम्परेचर है. ठीक है? सो इतना हीट ये अब्सॉर्ब कर पा रहा है. सो दिस इज हाउ इट इज एबल टू बैलेंस आउट द हीट. प्लस इसके पास एक और मैकेनिज्म है दैट 1 gallon of water is moved into the system and moved out of the system. So inside the system it is able to absorb the heat, get converted into water vapor, and when it is coming out of the system, this water vapor is being released and this water is being fed inside the carbon plates again. ठीक है? तो ये 1 gallon of water carbon plates के पास घूम रहा है in and out of the system, which is also helping evacuation of this heat. So this is how it has been able to balance out this heat. Now the objective of the Parker Solar Probe mission, the aim is कि sun के बाहर के surface को हम लोग बोलते हैं कोरोना, sun's solar surface. This is known as corona. अब ये जो बाहर वाला surface है, this is immensely powerful. बहुत ज्यादा amount of solar waves are generated. The effect of solar waves, if I tell you कि it is taking place on the sun surface, we will not be understanding the effect. But हमारे अर्थ पे at the poles or close to the poles we have auroras, aurora borealis at the north pole, aurora australiensis at the south pole. तो ये जो magnetic lines हम लोग देख सकते हैं कि magnetic lines का interaction हो रहा है, this is also because of the magnetic interaction of sun's magnetic rays का अर्थ के magnetic rays से interaction की वजह से ये दिखाई देता है. Now this solar winds that are generated at the sun's surface, it increases the intensity of the magnetic waves of sun. ठीक है? तो ये interaction ज्यादा होने लगेगा. ये धीरे धीरे आपको ज्यादा auroras दिखाई देंगे, and there will be certain phase wherein a very strong solar wind will have an impact on the overall magnetic lines, electrical lines on the surface of earth. So we are under the Parker Solar Probe, we are going to understand कोरोना के एकदम पास जाके we are going to understand कि ये solar winds होते क्यों हैं, what is the source of these solar winds, and we are also trying to understand the structure and dynamics of plasma and the magnetic field. sun के magnetic field का
फॉर्मेशन क्यों हो पा रहा है? अगर इनके पास कोई हार्ड मास नहीं है, देन हाउ व्हाट इज बर्निंग टू क्रिएट दिस मैग्नेटिक फील्ड? दिस मैग्नेटिक फील्ड का प्लाज्मा से कैसे क्रिएशन हो पा रहा है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, ठीक है? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन, जिसमें कि पार्कर सोलर प्रोब बाय रीचिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस हैज डन अ रिमार्केबल जॉब, ठीक है? So with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.